Hello everyone. Today we will start with your chapter number 6, page 57, working with the Excel environment. Is it okay? So, what's new in this? The ribbon and quick access toolbar are where you will find the commands to perform common tasks in Excel. There are two toolbars like ribbon and quick access toolbar from where you can perform your common task. So let us learn about them. So first is ribbon. In ribbon consists of multiple tabs which have several group of commands. Is it okay? So each tab have one or more groups. Some groups have arrow like this. You can see here this arrow. You can click on this for viewing more option. If you click on this arrow, you can view more option of that particular group. Is it okay? So click a tab to see more commands. If you want to see more commands, here are so many commands. You can click on any of the tabs so that more commands can appear in front of you. Is it okay? You can also adjust the ribbon with the ribbon display option. Here is your ribbon display option. This is your ribbon display option. You can adjust your ribbon settings from this option. There are three options present: auto hide ribbon, show tabs and commands. So whatever you want, you can select and your worksheet will appear like your selection. Okay, is it okay? Your next topic is creating a new blank workbook. So we will learn how to create a new blank workbook. So first step is that you have to select the file tab. This is your file tab. You will click on it and this type of view will appear in front of you. So from here you have to select new option and a new workbook will appear in front of you. This type of workbook will be present in front of you as shown in this figure. This will appear in your screen. Is it okay? So what you have to do, you have to click on file and then you have to click on new, so that a new blank workbook will appear. Is it okay? Next is templates. What is templates? Template is a predefined spreadsheet so that you can give quick response. It saves your time. It saves your efforts. Is it okay? Like in mobile phones also, you have seen when someone is calling you and you are busy, so you send a template. What are they? I am busy, I will call you back later, I am in a meeting. These types of templates you have seen. So same is here also. Template saves your time and efforts. Is it okay? So there are predefined formulas, custom formatting in the templates. So whatever you want to select, you can select according to your preference. So let us learn how to create a new workbook from a template. So first step is you have to click on the file tab. Is it okay? Next you will click on, next step is you will click on new. This is new. You will click on it and this so many templates are present in it. So whichever template you want to select, you can select accordingly. Let us suppose I select back to school planner. Is it okay? I select back to school planner. So this type of preview will be there in front of you. जब आप लोग टेम्पलेट यूज करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप लोग फाइल टैब को क्लिक करेंगे, उसमें न्यू ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स प्रेजेंट होंगे. फिर आपको जो भी चाहिए, जो भी टेम्पलेट आपको सही लगता है अपने अकॉर्डिंग, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रीव्यू आएगा कि वो कैसा लगेगा.
So what you have to do, you have to click on create. If you want to use that template, so what you have to do, you have to click on create. So what will happen, a new workbook will appear with the selected template. This type of workbook will appear in front of you. This template, back to school planner, you have selected back to school planner, so this template will be appeared in front of you. Is it okay? Next is your saving the workbook. How to save the workbook you created so that you can view it in the future also. So there are two different ways, save and save as. आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं, सेव एंड सेव एज. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? लेट अस डिस्कस नाउ. In the save option, when you create or edit a workbook, you will use the save command to save your changes. You will use this command most of the time. In save as, you will use this command to create a copy of workbook while keeping the original. Save and save as में main difference क्या होता है, जब आप लोग कोई भी फाइल आपने create करी और आपने उसे save कर दिया, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, उस फाइल को edit कर रहे हैं और उसको सेव करेंगे तो वो एडिट हुई हुई चीज उसी फाइल में सेव हो जाएगी. लेकिन आपको अभी अपनी पहली वाली फाइल भी चाहिए जो एडिट करने से पहले आपने सेव की थी. तो इस केस में आप लोग क्या करते हैं, सेव एज करते हैं. अगर आपको ओरिजिनल भी चाहिए और आपने जो मॉडिफाई किया, जो एडिट किया, आप लोगों को वो फाइल भी चाहिए, दोनों अलग अलग चाहिए, तो उस केस में आप लोग सेव एज करते हैं. इज इट क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज इज क्लियर. सेव आप तब यूज करते हैं जब आप लोग कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर क्रिएटिंग द फाइल, यू सेव दैट फाइल. इज इट ओके? बट इन सेव एज you will need to choose a different location or a copied version. Is it okay? So next is your how to save a workbook. So let us learn about that. What you have to do, you have to select the save command. This is your quick access toolbar. From here a floppy type image is printed, so you have to click on it. This is your save command. You have to click on it. So if you are saving the file for the first time, save as panel will appear. This panel will appear in front of you. Now you have to choose the location where you want to save your file. So what you will do, you will click on browse option. You will click on it and you will select the location where you want to save the workbook. Like this. You will click on documents, downloads, desktop, wherever you want to save your file, you will click on it and then you will click on save. You will enter the file name, with which name you want to save your file, and then you will click on save. What will happen? Your workbook will get saved. Is it okay? आप लोग क्या करेंगे, जब आप लोगों को वर्कबुक को सेव करना है तो आप लोग क्या करेंगे, क्विक एक्सेस बार में सेव बटन बना होगा, आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को ब्राउज करना है कि आप लोगों को उस फाइल को कौन से फोल्डर में सेव करना है. आप लोग वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसका फाइल नेम डालेंगे कि आप लोगों को किस नेम से फाइल सेलेक्ट करनी है और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी. इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट इज योर ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक. हाउ टू ओपन योर एग्जिस्टिंग वर्कबुक विच यू हैव सेव्ड अर्लियर. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने पहले वर्कबुक सेव करी, अगर आप लोगों को उसको ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे. व्हाट यू हैव टू डू, you have to click on open. Is it okay? You have to click on open. You will click on it, then you will browse and you will browse and then you will locate the folder in which you have saved your
file and then you will click on open. आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे. इज इट ओके? आप लोग क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे. फिर आप लोग के सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. आप लोग ब्राउज पे क्लिक करेंगे. ब्राउज के बाद आप लोग के सामने ऐसी स्क्रीन आएगी. तो आप लोगों को वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसपे आप लोगों ने अपनी फाइल पहले सेव की थी. वो फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे. आपने किस नाम से अपनी फाइल सेव की थी, आप लोग उस पर क्लिक करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन ओपन एंड योर फाइल विल गेट ओपन्ड. इज इट ओके? So next is your closing a workbook. How will you close your workbook? You have seen that a cross button is present at the right corner, right top corner of your workbook. Yes, all of you have seen that. So if you want to close the workbook, you have to click on it and your workbook will get closed. Is it okay? So that's all about the chapter. Rest we will do in our next class. Thank you.